Hello, everyone. I'm Motiram. I'd like to welcome all of you in my channel, Magical Learners Hub. So, today I have come up with a new topic, and the name of the topic is tag question. So, you may have got ideas about the tag question, and if you don't have the ideas, the idea will be shared today. So, what is tag question? I'll give you some ideas about that, and I'll also use Nepali and Hindi language so that you'll be able to understand it clearly. So before we move to the learning, here in the picture, what you can see, let's have a glance. Okay, you have been watching a teacher raising hand and two students raising hand. So here you can also see the sentence, the teacher asked questions. शिक्षकले प्रश्नहरू सोध्नुभयो और इसी वाक्य को अगर हिंदी में कहा जाए तो शिक्षक ने सवाल पूछा और साथ में लिखा हुआ है didn't see because she is a lady teacher. That's why the pronoun she is used here. फीमेल शिक्षक है और उसके लिए didn't see प्रयोग किया गया है. Two students raised hands. There you can also see two students raising hand. So they have raised hand and it was the past action. That's why didn't they is used here. So we'll be talking about some rules and at the same time we'll be talking about purpose and some more thing about tag question. First, definition. Tag questions are short questions added to a statement. These questions are used to confirm or seek agreement. So these are for confirmation and agreement. And if we like somebody or some other person to be engaged in our communication, then also we use tag question. इसका मतलब यह है कि एक छोटा सा प्रश्न जो हम स्टेटमेंट में यूज करते हैं और कन्फर्मेशन के लिए इसको प्रयोग करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई और दूसरा आदमी हमारी वार्तालाप में संलग्न हो, इसके लिए भी हम टैग क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं. और यदि नेपाली भाषा बोल्ने हो भने त्यस्तो चाहिँ सानो प्रश्नहरू जो स्टेटमेन्टमा जोडिएको हुन्छ र त्यसै गरी यसले चाहिँ कुनै कुरा पक्का गर्नको लागि र अर्काको सहमति लिनको लागि प्रयोग हुन्छ र कुनै अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो वार्तालापमा सहभागी गराउनको लागि ट्याग क्वेसनको प्रयोग गरिएको हुन्छ. यो तपाईको जानकारी रह्यो टैग क्वेश्चन संबंधी. इस जानकारी में आपको मैं 3 बातें बता रहा हूं. ये एक टैग क्वेश्चन एक छोटा सा प्रश्न है जो स्टेटमेंट के लास्ट में प्रयोग किया जाता है. दूसरी बात है इसका पर्पस और मकसद. इसका मकसद यह है कि इसमें किसी भी बात की कंफर्मेशन की जाती है और ये बात पक्का है या नहीं तहकीकात की जाती है. और दूसरी बात है कि इसमें किसी दूसरे आदमी को वार्तालाप के लिए समावेश किया जाता है. अब मैं आगे बढ़ूंगा. फोकस
Tag question focus. What does tag question focus? We'll be talking about that. The main focus of tag question will be the use of contracted form. And as for example, isn't, aren't, won't, etc. These are the contracted form because we cannot use full forms like that, is not, are not, because they are not the tag questions. They are not contracted. If we don't contract in the tag question, we cannot make it sure. So, second rule, we should start auxiliary verb with small letters. So, we cannot use capital letters. And like for example, he is a teacher, isn't he? We cannot say is not he. We must use contracted form there. And at the last, we always use tag question, means sign of interrogation. As for example, they play cricket, don't they? And separate tag question and statement with comma. There is comma, and we must use that punctuation mark to separate statement and tag question, which just draws the demarcation line between them. And it must be used according to tenses also. अब म यो कुरालाई नेपालीमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। विशेष फोकसको कुराहरू गर्ने हो भने ट्याग क्वेसनमा जहिले पनि हामीले एकदम संक्षिप्त रूप लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सबै शब्दहरू हामी लेख्दैनौँ। त्यसै गरी सहायक क्रियाहरू हामी लेख्दछौँ। सहायक क्रियाहरू, एक्जिलरी भर्बहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अनि त्यसै गरी हामीहरू त्यो वाक्यको लास्टमा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग गर्छौँ र स्टेटमेन्ट र ट्याग क्वेसन छुट्याउनको लागि हामी कमाको प्रयोग गर्छौँ। हिंदी में कहा जाए तो जब भी हम टैग क्वेश्चन प्रयोग करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम लोग जब सहायक क्रिया को यूज करते हैं, और सहायक क्रिया जब यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और इसके लिए जब अंतिम स्टेटमेंट के अंतिम में आप टैग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी जानकारी में हम टैग क्वेश्चन संबंधी बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आपको आगे I'll be taking you further. So if there is male in the statement, we use he. If there is female, we use she. If there are things or things, we can use it. As for example, Ram goes to school, doesn't he? Now, let me go further. Let me go further about negative and positive. If there is positive statement, we make negative tag. And if there is negative tag statement, we make positive tag. यदि स्टेटमेंट सकारात्मक छ भने नकारात्मक ट्याग क्वेसन, यदि चाहिँ नकारात्मक छ भने सकारात्मक ट्याग क्वेसन हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हियर इज, ही इज अ टिचर, he is a teacher. This is positive statement and will make isn't he, that is negative tag. M changes into aren't. I am a teacher, aren't I? I am a student, aren't I? So similarly, if there is was, wasn't, were, weren't, has, hasn't. So has, hasn't, and has, doesn't also. There is the confusion. You may be confused about the has, hasn't, and has, doesn't. If there is the use of has as an auxiliary verb, we use hasn't. He has played, hasn't he? And if there is has used as a main verb, then doesn't he? He has a ball, doesn't he? So there is the change. Have, haven't, and have, don't. This is the same case. They have come, haven't they? They have tickets, don't they?
will on cells and can't may mind may meant. They will come, or they we shall play, shan't we? He can dance, can't see, and he may come, meant he. अब यसमा कुरो बुझ्नुपर्ने के रहेछ भने सहायक क्रियामा यदि चाहिँ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भए नेगेटिभ ट्याग क्वेसन बनाउने र नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भए पोजिटिभ ट्याग क्वेसन बनाउने मुख्य आइडिया हो। यस आइडियाको अनुरूप हामीले अगाडि बढ्ने हो भने कन्ट्र्याक्टिभ फर्म युज गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँ, इजन्ट, आरन्ट, वाजन्ट, वेरन्ट। त्यसै गरेर सब्जेक्ट तपाईँले युज गरेको देख्नुहुन्छ। यस कुरामा हामीले विशेष ख्याल गर्ने हो भने हामी सजिलै त्या क्वेश्चन को बारे में जानकारी लेना सक्छौं। जब आप सहायक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं तो वाक्य में जो सहायक क्रिया है उस सहायक क्रिया को रिपीट करना है और उसके बाद यदि वो वाक्य सकारात्मक है तो नकारात्मक टैग क्वेश्चन और वो वाक्य नकारात्मक है तो सकारात्मक टैग क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद हमने एक्सिलरी वर्ब और सहायक क्रियाओं के बारे में जानकारी के लिए 24 सहायक क्रिया है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड टू, यूज टू, etc. So you must consider these all auxiliary verbs so that it becomes easy for you to learn that question. Now, could changes into couldn't, should, shouldn't, would, wouldn't, ought to, oughtn't to. I should do, couldn't I? You should drive carefully, shouldn't you? It would be late, wouldn't it? You ought to work, oughtn't you? So these are some of the examples. Now, other rules I'll be talking here. Basic rule: positive statement, negative statement, positive tag, which I have been telling till now. So there is another rule. If there is not only not, there may be other words which can be used as negative. Similarly, never, seldom, hardly, barely, scarcely, etc. are negative words and take positive tag. ये जो शब्द हैं ये नेगेटिव कहलाते हैं और अगर वाक्य में इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं तो हमको पॉजिटिव टैग बनाना है। सपोज ही नेवर कम्स टू स्कूल, डज ही? शी सेल्डम ब्रिंग्स हर होमवर्क, डज शी? इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। यूज अ comma before the tag and with a question mark. Use a small letter when the tag question begins after comma. Tag includes auxiliary, modal verb plus subject pronoun. Auxiliary verb और modal दोनों टैग क्वेश्चन में आ सकते हैं। और मैं आपको फर्दर स्लाइड में ले जाता हूं। Forming tag with auxiliary and main verb. Use auxiliary modal verb from statement in tag question. If no auxiliary, use do, does, did based on tense. मैं बात कर रहा था जब उसमें auxiliary verb है तो auxiliary verb को रिपीट करना है। अगर वाक्य में auxiliary verb नहीं है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज और सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करना है। और ये एक एग्जाम्पल मैं आपको पेश करता हूं। ही ईट्स राइस, इसमें जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका टैग क्वेश्चन होगा डजंट ही। अगर मैं इस वाक्य को दे ईट राइस कर दूं तो इसका होगा डोंट दे। अब मैले यस कुरालाई जानकारीको लागि के भन्न चाहन्छु भने यदि वाक्यमा एक्सिलरी भर्ब रहेको छ भने त्यसलाई रिपिट गर्ने हो। एक्सिलरी भर्ब छैन भने टेन्स अनुसार सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भए डू, डज र सिम्पल पास्ट टेन्स छ भने डिड को प्रयोग गर्ने हो। जस्तै ही इट्स राइस, डजन्ट ही? दे इट राइस, डोन्ट दे? दे एट राइस हुन्थ्यो भने डिडन्ट दे हुन्थ्यो। यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी भइसक्यो। Now I'll be taking you about the special cases in question tag.
I am. If there is am, aren't I? I am right, aren't I? If there is let's, then we can use shall we. And if there is imperative sentence, we use will you. Imperative sentence contains request, order and suggestion. imperative सेंटेंस का मतलब है आदेशात्मक वाक्य। इसमें अनुरोध, सलाह प्रयोग किया जाता है। अगर क्लोज द डोर किसी ने कहा है तो यह आदेश है, इसमें विल यू का प्रयोग होगा। यदि मैले कुरो गर्दै जाँदा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको प्रयोग हुन्छ भने यसमा हामीले सल्लाह, आदेश र आदेशको प्रयोग गर्छौँ, सुझावको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा जहिले पनि हामी विल यूको प्रयोग गर्छौँ। अर्को कुरा रहेको छ, अब हामी केही प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। What are you looking in this picture? You may think that, but I have written here, this is a person, Jack. Jack is eating an apple. आप लोगों को पता चल गया होगा, जैक सेब सेब खा रहा है। अब आप लोग पेन और पेपर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। क्या होगा? इसमें मैन वर्ब क्या है और सहायक वर्ब क्या है? सहायक क्रिया क्या है? क्या है? जैक इज ईटिंग एन एप्पल। सहायक क्रिया है इज। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब लिख लिया होगा। मलाई लाग्छ धेरै जसो व्यक्तिहरूले यसको उत्तर लेखिसक्नु भयो होला। हो, तपाईहरुले लेखिसक्नु भयो। द्याट्स भेरी गुड। Yeah, that's correct. You wrote it very good. Isn't he? Good. You did better job. Now, you can see another picture here. The people were fighting on the street. इस वाक्य में लोग सड़क में लड़ाई कर रहे थे। अब इस वाक्य को मैंने रखा है नीचे, द पीपल वर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट। आप लोग समझ लीजिए इसमें सहायक क्रिया क्या है। आप लोग सही हो, वेयर सहायक क्रिया है। अब हमने क्या करना है? नॉट थपना है। अब क्या हुआ? वेरंट। द पीपल प्लुरल है, इसलिए हम क्या करेंगे? वेरंट दे। तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो यस वाक्यमा मान्छेहरू सडकमा लडाई गरिरहेका छन्। अनि यसमा चाहिँ सहायक क्रिया के रहेछ? वेयर। अनि हामीले के गरौँ? नट थप्यौँ। नट थपिसक्दाखेरि हामीलाई वेरन्ट भइसक्यो। अनि हामीले सब्जेक्ट चाहियो। सब्जेक्ट द पिपल भएपछि त्यो के रहेछ? प्लुरल रहेछ। अनि आन्सर के भयो? वेरन्ट दे। तपाईहरु राइट हुनुहुन्छ। यु आर राइट। आप लोग सही हो। अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है। इट रेन्ड हेभिली। भारी वर्षा हुई। धेरै ठुलो पानी पर्यो, वर्षा भयो। अब यसमा त डेट पनि छैन, डु पनि छैन। भने यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो पास्ट टेंस हो। इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए आप लोग को समझना है कि ये पास्ट टेंस है, तो इसलिए हमको लगाना है डिड। और ये पॉजिटिव क्रिया है, इसलिए क्या करना होगा? डिडंट इट। और इसके साथ हमको जो टैग क्वेश्चन समाप्त करते हैं। सो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थैंक यू। Keep on watching Magical Learners Hub and get new ideas, new lessons, and new insights, because together we can learn. And I have tried to communicate in 3 languages, and due to the communication gap, some of the slips or language barriers may come there. I think that you will understand it very easily and try to learn together, because if we learn together, we can get knowledge, and that will be very good for our understanding. Thank you. Have a great time.